Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexa High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information about the company's business growth, business model, their growth journey, their future plans, and all our investors benefit significantly because they take a conscious call when they invest in such companies. And friends, today we've got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Anya Polytech and Fertilizers Limited, and we have the privilege of having the promoter and the top management. We have Mr. Yashpal Singh Yadav, who's the managing director of the company. Yashpal ji, thank you very much for sparing your valuable time, sir. It will be a pleasure Hi, for sir. me to talk to you. Yeah. So, Hi, sir. Thank you so yeah, much. yeah. So we also have yeah, Mr. Anurag, Srivastav, who's the strategic head and operation advisor for the company. Anurag ji, thank you for you also for sparing your valuable time. So without wasting time, Yashpal ji, first question to you. If you could explain to us, what is the business model? What is the main business of our company? If you could explain in a simple way for our investors. And secondly, what is the positioning of our company? In fact, where do we stand in both the segments? I believe we have got two businesses. And Yes, sir. how did this business journey start? If you could tell us, was it a first generation effort from your side, or was it started by your father and then you took it over? So if you could share your thoughts on this part also. Uh, sir, this company it was started by me only, and I'm first generation entrepreneur in my family. And we started this company in 2011 with a vision to provide high quality woven bags to fertilizer industry. We selected this location because strategically we are very well located in terms of woven bag production, because we are surrounded by 6 to 7 fertilizer leading fertilizer units of India. So, and we are supplying all our material to them only, and from last 10 years. So, basically, Anya operates in two segments. One is packaging solution, and second is fertilizer. Fertilizer business we entered in 2015 because of our exposure with fertilizer industry, because we are supplying bags to fertilizer industry only. So maximum quantity around 75%. So we realized that there is a shortage of micronutrient fertilizer, and we started with micronutrient fertilizers in 2015. Then later on we added multiple products in our basket, and currently we are manufacturing all micronutrient like ferrous, zinc, magnesium, copper, and micronutrient mixtures, biofertilizers, and single superphosphate. So we have a huge basket for fertilizer and biofertilizers. So company is operating in two segments. One is packaging solution, which includes HDP, PP, woven bag, BOPP bags, and now we are expanding in jumbo bags also, FIBC bags. So that is Okay. one segment, and second segment is fertilizer segment. Okay. Fine. Thanks for the answer, Yashpal ji. Now tell me one thing, Yashpal ji. In terms of, you said you operate in a place where you are very close to the fertilizer company. So if you could give us some idea about basically the geographical reach currently, which part of the country are you people dominant? कौन से states में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और फिलहाल आगे चल के in future going forward, what is the kind of uh, typically in the sense that in expansion, कौन से दूसरे नए states आपको enter करने के plan? So, segment wise, I'll explain you, sir. So, currently, as I told you, that in HDP, PP woven bags, we are supplying to all the 6 companies which are where we are surrounded by them, like IFCO, Cripco, Kanpur Fertilizers, Indogulf, Yara, all these companies, and Jubilant. So all these companies, we are registered vendor for all. And recently, the government of India started HURL, where we are registered ourselves, and now we are one of the qualified vendor for supply of HDPE bags.
Okay. So we are supplying our maximum quantity to these companies. Then our second customer is sugar industry. So we are located in sugar belt of UP. We are in Shahjahanpur, and we have 16 to 17 sugar mills around us. So Okay. but that business is seasonal. So we supply them 6 to 7 months, and rest 5 months we supply. To different sectors like FCI, for BOPP bags, multiple products we manufacture. So we supply outside. We are trying to grab opportunity in export market as well. So Okay. this is how we are occupied in HDP PP bags, and Okay. is our second segment fertilizer. We have presence in 17 states of India, from north to south, and we are equally strong everywhere, because our potential states for our business, for micronutrient business and fertilizer business, are Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal, and Rajasthan. Okay. So these are the states from where we get maximum revenue. But we are present in Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamil Nadu, Punjab, Haryana. All these We are supplying our material to all these states. Okay. So we have a good, strong presence, and because of our presence in 17 states, we have a lot of B2B orders as well. We are supplying to all the leading fertilizer manufacturers like IFCO, Cripco. We were supplying to IPL also. We are supplying to state markets as well. So this is how we are placed in market. No, I think very nicely articulated, यशपाल जी. Now मेरे को बताइए यशपाल जी, what is the total install capacity in the packaging side? कितनी install capacity tonnage में अपनी होगी, और fertilizers में what is our capacity? So in woven bag, initially in 2011, when we started in terms of fertilizer bags, we were manufacturing around 3.5 crore bags per annum. We were able to. Our installed capacity was 450 kg per hour. Our processing was. Okay. And then later in 2019, we expanded ourselves, and now our capacity is just doubled, more than doubled. So Okay. in terms of fertilizer bag, if I'll say that we can manufacture more than 7 crore bags per annum, and our Okay. installed capacity now is more than 1 metric ton per hour. Okay. Yeah. And in fertilizer sector, our micronutrient unit is 16,500 metric ton per annum, and our single superphosphate unit is 66,000 metric ton per annum. Okay. No, understood. Yashpal ji, now tell me one thing in terms of the marketing reach. Both these products are complementary, fertilizers and packaging for fertilizers, which is your main revenue Hmm. kind of product. Tell me one thing, sir. हमारे B2B business में what is the marketing network which we have established? Do we have distributors, master kind of distributors state wise? क्योंकि 17 स्टेट में हम काम करते हैं. तो सर इसके बारे जी में कुछ बताइए. सर, वोवन बैग तो B2B ही है. उसमें हम सारी, एज आई एक्सप्लेन दैट आई एम सप्लाइंग टू ऑल द लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनीज ऑफ इंडिया. Now, because we are also in fertilizer, so our both the segment, they complement each other. So around 10 to 15% of our production we are utilizing in our company. Okay. And in fertilizer, we have both the networks. We have B2B and B2C. And recently, company started its own retail as well, because now we have a good product basket. So B2B में तो we are supplying to the major uh, companies like IFCO, Cripco, and all these companies, and state governments, Andhra, Telangana, Markfeds, Punjab Markfed. We are supplying to them, and we have our dealers network in all these states, and we supply them regularly. So that product goes under Anya's brand name. And then we came up with new strategy to open 70 retail stores
across the country, out of which we have started 5, and response is very good. So we want to, our aim is to reach to the end customer. Okay. We are expanding our retail network as well, and we will add more products in our, because now when we will have our own retail, so we will let others uh, also to put their product in our retails Okay. network. Okay, I think very good. Anurag ji, sorry for keeping you waiting. Now, sir, on the new strategic initiative which Yashpal ji mentioned, if you could give us some more, details, because I believe you are handling the strategic, division. तो सर ये रिटेल का जो बिजनेस है इसमें क्या काइंड ऑफ प्लान्स हमारी कंपनी के हैं एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल फॉर अस से ओवर द नेक्स्ट से 2-3 इयर्स, कितना बड़ा मार्केट है क्योंकि अभी हम लोग ने काफ़ी बड़े 17 स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं. So, sir, what is the kind of opportunity which the company is looking for getting into the retail side, and what is the kind of broad capex which will require? Because I believe you'll have to build a network, you'll have to build a separate distribution chain for this. So, sir, इसके बारे में कुछ बताइए. See, I would say before we reach to this question which you have asked, I'll say that Yashpalji is very young, but parallelly is a very strategic approach and enterprising guy. When we established this unit of bag, he comes from Jhansi, but he's established and lives in Noida, studied in Lucknow, but placed the unit which was in the mid of mid of the fertilizer unit and fertilizer units and sugar belt, just to safeguard the cost of logistics. So he is saving the cost of logistics, which gives an edge. Similarly, when we started doing business with for 5 years for bag manufacturing, we understood that we are getting closer to the farmer. And then he thought of having something in the fertilizer domain. So within 5-6 years, he thought that way. Now, today, if you see, the world is moving towards sustainable energy, right? So CO2 emission has to be reduced. Again, he is thinking of sustainable energy business, which is where I come for the business purpose. Now, looking at the what your question was that margins. When we do retail business, you understand we have better margins. We established a network of 17 states. We have already reached to 17 states. Now we can leverage ourselves to get better margins. As Yashpalji told that we utilize only 15-20% of our business, rest becomes the white label businesses. In white label business, you understand the margins are very less. But when you start selling by yourself, doing retail, your margins increases. So by establishing only 5 in last 1 year, we have seen a sustainable margin growth in that business, and that is where we move. We are thinking of establishing in these 17 states, 5 per states, roughly 75 retail stores, and which will help in us in terms of giving investors the return. So it's not that we are coming to for this expansion of ours. When we are coming into market, we know that we have to return back to the investors to not only build the brand but to build the business also. So we are moving that way. And I'll request Yashpalji to add something on it. Yeah. So our my aim is to provide all the solutions in packaging industry and in fertilizer industry through our company. So that's why we are continuously adding new products, and we are moving towards sustainable energy. We also entered in, because of our exposure with farmers. We want to we want to help them with their crop in their crops, and after that. So we are now we are entering into biomass pelleting business, which is very I'll say unorganized industry so far, and we want to be the first player who, Okay. of so as we are located in sugar belts, we have a lot of waste material which we'll buy to make biomass pellets, and farmers that will help farmers to earn some extra money. Okay. So No, understood. that will build our brand with them,
and we will enter into a green energy sector, which is upcoming industry for India. Okay, ठीक है. Yashpal ji, now one pointed question is after this answer. I just wanted to understand, sir, qualitative aspects में, this is a very great opportunity which you are talking, that getting directly to the customer, retail sale बना के. Sir, qualitative aspects की बात करें, if I talk about certain qualitative aspects of the business, sir, how do we add value to the customer? You got a packaging unit, you got a fertilizer unit, so typically, in what way are we adding value? Like as you rightly said, you're getting closer to the customer. But sir, आप अभी as of now अगर मैं पूछूं कि sir, in our industry, how are we adding more value to the customer? Is it execution? Is it quality? Is it service? सर ऐसे दो तीन चीजें हमको बताइए जो it will help us understand the company's profile in a much better way. सर वैल्यू एडिशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी टेल यू कि वी आर इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वी आर द फर्स्ट कंपनी who are having fully automated production facility. So the quality of our product, no doubt, it's much better than what is available in market. That's how the farmers and these companies, big companies, they recognize us because of our quality and technology. So technology wise, we are very sound. Secondly, I can say that we are one of the biggest. We have biggest production facility in micronutrient, 16,500 metric ton, which is like somewhere around 50 to 55 tons per day of monohydrate, and then 30 metric tons of heptahydrate per day. So it is one of the biggest and most advanced technology मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. सो एक तो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की आउटस्टैंडिंग है, एंड वी हैव लाइक लॉट ऑफ रिकॉग्निशंस, लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर दैट. इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कॉस्टिंग है, दैट ऑलवेज हेल्प्स अस बिकॉज ऑफ आवर, एज आई सेड, कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, दे आर around us only. We are very well located next to Rec Point also. We are very well located to next to these fertilizer companies, these sugar mills. And हमारी पेरीफेरी में हम सिमिलर बिजनेस, मतलब वोवन बैग हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर्स हो, हम कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं. सो एक प्राइसिंग and quality, these are two biggest strength of Anya. Okay. And thirdly, we are very innovative, and we always come up with every year we are coming up with new products in our basket. So we have a team, we have a proper lab in our facility where we discuss, we have chemists, engineers, where they develop new products. We are in touch with many agriculture universities. We do field trials, we meet farmers, our marketing team goes and they conduct, it is mandatory that all the states we have divided into territory, and every territory has to do one farmer meeting in a month. So we get direct feedback that what they need. Like recently, last year, we developed a product for sugarcane special. That was required by the farmers because farmer wanted everything in that, all micronutrients in one packaging. So we provided them, and the product is getting very good response in farmer. So we develop, we innovate, we have best quality, best price. That is our strength. Okay. No, I think very nicely articulated, Yashpal ji. Sir, काफी मेहनत आपने की है, तो very nice to hear. Yashpal ji, now on the financials, I wanted to ask you, like, FY24 numbers I was observing, very strong numbers. Sir, 102 crore का revenue है, जो पिछले साल 92 crores था. प्रॉफिट सर काफी जंप हो चुका है, 82 लाख का ऑलमोस्ट 4 करोड़ हो चुका है. तो सर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई दिस जंप हैपेंड? आई मीन बिकॉज़ ऑफ बेटर प्राइसिंग. कोविड, पोस्ट कोविड हमारा बिजनेस हर साल अराउंड 15% to 20% बढ़ा है.
और हम बिकॉज हर साल हम कोई नया स्टेट स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम हम हमारे बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, इनिशियली वी वर सेलिंग हार्डली 700 to 800 metric ton of micronutrients. Now we are at 2500 and this year we will cross 4000. So Okay. business भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है. सेकेंडली वी हैव रिड्यूस्ड आवर कॉस्ट्स. एनर्जी कॉस्ट में रिडक्शन आया है बिकॉज वी इंस्टॉल्ड सोलर यूनिट इन आवर प्रोमाइसेस. वी मूव टू ग्रीन एनर्जी. सो 20% हम सोलर सेल्फ हमारा कैप्टिव सोलर प्लांट है, तो उससे एनर्जी कॉस्ट में रिडक्शन है. देन वी आर रिसाइकलिंग आवर मटेरियल. सो जो भी हमारी वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे एक एडिशनल एडवांटेज है. Then we have integration of our products. So zinc का जो waste है that we uses in our single super phosphate industry, जो waste हम पहले फेंकते थे, डिस्चार्ज करते थे, अब वो हम उससे जिंक एक्सट्रैक्ट करके जिंकेटेड सुपर फॉस्फेट बनाते हैं. तो हमने जो अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए हम हर साल बहुत कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू रिड्यूस आवर कॉस्ट every year. So, No, fine. yeah. आई थिंक ये काफी लॉजिकली आपने समझा है, तो थैंक्स फॉर द आंसर यशपाल जी. यशपाल जी, नाउ वी आर ऑलरेडी इन दिसंबर, अभी तो FY25 साल भी खत्म होने वाला है. सो आई जस्ट वांटेड टू नो, विदाउट गिविंग अ नंबर और एनी न्यूमेरिकल फोरकास्ट टू अस, इफ यू कुड टेल अस सर, ग्राउंड लेवल पे क्या लग रहा है, बोथ फॉर पैकेजिंग एंड फर्टिलाइजर, जो अभी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वहां से क्या सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, यानी व्हाट आर द सिग्नल्स यू आर गेटिंग फ्रॉम कस्टमर्स? विल दिस ईयर आल्सो बी अ गुड ईयर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर? Yeah, for us it's a good year. पिछले साल से हम बेटर ही करेंगे. एज आई टोल्ड यू कि 15-20% की हमारी ग्रोथ होती है. सो इट विल बी लाइक दैट ओनली एंड मे बी मोर. बट ओके. ग्राउंड पे इंडस्ट्री, वोवन बैग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है because of India's export is suffering because of export में woven bag export में Chinese companies काफ़ी एंटर कर रही हैं, और वो उनको इंडिया का बिजनेस पिछले कई सालों से सफ़र हुआ है. सो लोकल मार्केट में बिल्कुल कंपटीशन बढ़ा है. बिल्कुल. बट फॉर आन्या हम इंडिया के कुछ सिलेक्टेड प्लेयर हैं जो आज भी 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 100% हमारे पास ऑर्डर, हमारे पास वी आर ओवर बुक्ड, ऑलवेज ओवर बुक्ड. वो रीज़न ओके. हमारे लोकेशन एंड आवर लास्ट 10 years रिकॉर्ड. So ओके. and we the best part is we 70 to 80% we manufacture only one product. So हाँ, because of एग्जैक्टली. competition, we are able to offer good price because 24/7 30 days हम एक ही फैब्रिक बनाते हैं, एक ही टाइप की प्रिंटिंग करते हैं, एक ही टाइप के बैग्स बनाते हैं. सो वी बिल्कुल अचीव बेटर एफिशिएंसी, एंड हमारी मैन पावर भी हमें कम यूज़ होती है उसमें. बिल्कुल. सो पैरेलली इन फर्टिलाइज़र जैसे जैसे सारे ग्रेड्स हमारे पास आते जा रहे हैं, हमारी बास्केट बड़ी होती जा रही है. फर्टिलाइज़र में भी कंपटीशन है, बट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट लाइन वी हैव सम वेरी नीच प्रोडक्ट्स, तो उसमें उतना कंपटीशन नहीं है, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. ओके, गुड. आई थिंक नाइस टू हियर. यशपाल जी, नाउ कमिंग ऑन द वर्किंग कैपिटल साइड, आई बिलीव, देखिए पैकेजिंग का तो आपने बराबर बोला कि कंपटीशन है, लेकिन यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर लोकेटेड इन द राइट प्लेस, प्लस यू गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक एडवांटेज. मेरे को बताइए सर, दोनों बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा है? क्योंकि वॉट एवर वी हैव हर्ड, आई मीन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, फर्टिलाइजर बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट आता है वो थोड़ा सा डिलेड आता है, बट पैसा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है. तो मेरे को बताइए सर, मोटा मोटी वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे लिए क्या, व्हाट इज द काइंड ऑफ नॉर्मल वर्किंग कैपिटल सर साइकिल? एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर मैं दोनों बिजनेसेस की एवरेज कैलकुलेट करके बताऊं आपको, तो 45 days के अराउंड. एंड ओके. हाँ, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्रेडिट पहले ज़्यादा देना पड़ता था, हाँ. और पेमेंट रियलाइजेशन 60 to 90 days भी था. बट पोस्ट कोविड ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चेंज आया है, एंड इट इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर. बट ओके. बिकॉज वी वांट टू like enter in retail we are entering in retail market. तो retail market में realization उतना better है because we are selling through our own retail, and maximum एग्जैक्टली. we are supplying to big companies. So payment आता है, but average cycle is 45 days. नहीं, ठीक है.
अच्छा, अभी जब आपने रिटेल की बात की है यशपाल जी, प्लीज टेल मी सर, व्हेन इज दिस रिटेल इनिशिएटिव एक्चुअली गोइंग टू गेन ट्रैक्शन? कैन वी सी समथिंग हैपनिंग इन FY 26 from this business Yeah, initiative? yeah, yeah. I mean, our retails are operational now. We have Okay. started 5 retails in UP. One is Shahjahanpur, Lakhimpur. I think one is in Jhansi, one is in Aligarh. So हमने जहाँ पे हमारा अपने प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी थी, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिटेल स्टार्ट किया एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. सो Okay. लास्ट ईयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन था रिटेल का, इस साल बहुत अच्छा है. Okay. Okay. एंड रिटेल में हम लोग अपने प्रोडक्ट ही नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम Okay. यूरिया डीएपी के लिए फर्टिलाइजर के लिए हमारे टाई अप्स हैं डिफरेंट कंपनी से, Okay. तो उनके प्रोडक्ट भी रखते हैं. सो वी आर गेटिंग ए वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम Okay. रिटेल. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू एक्सपेंड इट. इनिशियली हमारा टारगेट था कि रिटेल अपनी कॉस्ट कवर कर लें एंड हाँ. एज ए ब्रांड हम मार्केट में प्रेजेंस रहेंगे रिटेल के थ्रू, बट ऑल आर रिटेल सेंटर्स आर प्रॉफिटेबल. Okay. Good to hear. Sir, now the most important question, Yashpal ji, sir, we are going public. If you could tell us, sir, what is the objective of raising money, and secondly, how much money are we planning to raise from the capital market? Sir, we are raising between 45 to 50 crores. एंड ऑब्जेक्ट हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सो इनिशियली एज आई टोल्ड यू दैट आन्या इज एंटरिंग इनटू ग्रीन एनर्जी. हमने लास्ट ईयर एक ग्रीन एनर्जी का छोटा प्रोजेक्ट किया. वी इंस्टॉल्ड 750 किलोवाट सोलर which we are expanding again to 1.5 megawatt. सो कंपनी has realized कि हम एग्री वेस्ट को ग्रीन एनर्जी में यूज़ करें. So we started this new vertical, and Mr. Anurag is taking care of that. So Okay. we have 2 to 3 big power plants around us. Reliance Energy भी हमारे पास आसपास, NTPC भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं. So initially what we are trying to do, we want to use rice straw, and we want to buy sugar cane waste from sugar industry, and we want to make a biomass pellet, and we want to supply to these power plants. These Okay. power plants have already given us LOI. Once we start our project, and they will sign the MOU. And as Okay. the government of India has made it mandatory that all the coal-based power plant, they have to shift like 5%. They have to use green energy. These biomass pellets. They have to move Okay. on green energy. And Okay. later, government is going to make it 10% for every coal-based power plant. So we are preparing ourselves for that sector only. And Okay. our plan is to start first unit, and because this unit is very unorganized, and we want to be the first mover to make one brand across the country. So in future we have planned to open, say in Rajasthan we want to open one unit for biomass pellets, and we want to supply to Gandhinagar and Gujarat, all those industries where they have power plants. And in Gujarat, a lot of material is available which can be converted into biomass pelleting. So this Okay. green energy project, we are diverting around 33% funds on this green energy project. Then we want to expand our existing business. As I mentioned that we have HDP, PP, BOPP, and all everything in woven bag industry except FIBC bag, jumbo bags. So Ah. we will expand our unit, and we will expand our product line, and we'll install a jumbo bag unit in our Shahjahanpur factory only. And we are planning to export those jumbo bags to in Middle East and Europe. So we already have MOU with one company in Middle East, and they will start buying from us once we start producing. So around 30% will be used there, and balance 33% we will use in our single super phosphate unit. So currently our production capacity is 66,000, and because we have seen this year there was a huge shortage of phosphatic fertilizer, and industry is doing single super phosphate industries are doing really well. So we want to expand our production facility, and we will increase our production capacity from 66,000 to 1,20,000. So, Okay. I mean, this is a main object for the IPO. No, fine, fine.
यशपाल जी, ये सोलर का जो फैसिलिटी है, यानी बायोमास पैलेट्स आपने जो बोला, ग्रीन इनिशिएटिव प्लस ये एक्सपेंशन फॉर एसडीपी एंड फर्टिलाइजर यूनिट, सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस these facilities to be operational, यानी कभी से ये कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे? सर ये दोनों सिंगल सुपर फॉस्फेट का एक्सपेंशन विल टेक आई थिंक 6 months फ्रॉम जनवरी। तो जून जुलाई में वो ऑपरेशनल हो जाएगा 25 में। वोवन बैग में भी सेम टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम है। वी हैव अदर थिंग्स रेडी, सो इट वोंट टेक मच टाइम। सो जून जुलाई तक ये भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस न्यू इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी बायोमास पैलेट will take around 10 months from January. Okay. So it will come in production, I think, in October, November next. अच्छा, तो बेसिकली सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर होपफुली, बराबर ना? Yes, sir. सर, और नॉर्मली फ्रॉम अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव यशपाल जी मेरे को बताइए कि हमने अगर 1 रुपया धंधे में डाला तो नॉर्मली हमारे बिजनेस में एसेट टर्नओवर कितना होता है? अभी आप यू आर सेइंग दैट फॉस्फेटिक कैपेसिटी यू वांट टू डबल का, ये मेरे ख्याल से पैकेजिंग कैपेसिटी भी आप नया प्लांट डालने वाले हो, तो मोटा मोटी सर एसेट टर्नओवर कितना होता है? आई मीन अगर आपने 1 रुपया डाला तो व्हाट इज द नॉर्मल टॉप लाइन व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट से ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आफ्टर द प्लांट स्टेबलाइजेस? So, sir, ऐसे numbers में it is difficult, but in projections we have mentioned that this year we want to achieve top line of 140 to 150 crores, and by next year we will because the new production lines will come and they will add some additional value. So next year we will cross our target is to cross 200 crores. ठीक है, समझ लिया। सर अभी आखिरी सवाल सर आपको, वी हैव सीन कोविड एंड डिस्पाइट दैट सर नाउ इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक। सर एग्री तो गवर्नमेंट का फोकस रहा है, और जैसे आपने बोला कि यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर लोकेटेड इन द राइट प्लेस इन द मिड्स ऑफ वेरी गुड कस्टमर्स। सर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और सबसे बड़ा रिस्क क्या है, एंड हाउ हैव यू मैनेज दिस रिस्क अप टिल नाउ? सर इसके बारे में बताइए। सर चैलेंज दोनों सेगमेंट में, वोवन बैग इंडस्ट्री इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट सफर कर रहा है ग्लोबली बिकॉज ऑफ चाइना। पैरेलली हम लोग एक्सपोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर कम्पीटिंग विद दोस चाइनीज प्लेयर्स, बट biggest risk is only petrochemicals के prices and local market. So local market में जो stress है, अभी इंडस्ट्री में stress है और बहुत competition है. So but I think next year it will be very good. So एक ये challenge है, दूसरा government policies भी हैं because FCI every year they are one of the biggest buyer और उससे पूरी इंडस्ट्री टर्न अराउंड होती है, बट पॉलिसी होती है कि कई बार वो जूट बैग पे शिफ्ट कर जाते हैं, जूट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, सो वो इंडस्ट्री को थोड़ा अफेक्ट करता है। सो वोवन बैग में तो यही फैक्टर है मेन कि रॉ मटेरियल की प्राइसिंग, पेट्रोकेमिकल प्राइसिंग एंड द गवर्नमेंट। फर्टिलाइजर, आई थिंक फर्टिलाइजर आई विल से कि ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, अदरवाइज द इंडस्ट्री इज डूइंग रियली गुड इन इंडिया। नहीं बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट इन सेइंग कि बोथ द इंडस्ट्रीज आर कोर इंडस्ट्रीज। आई मीन एसडीपी में तो होपफुली सिंस यू हैव अ वेरी पॉजिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर और अच्छा कस्टमर बेस, तो सर आपके लिए तो अपना रनवे पड़ा है फार्मर्स में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए, बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट आवरसेल्फ डायरेक्टली टू द फार्मर्स ऑफ इंडिया। सो हमने जितने भी हमारा प्रोडक्ट लाइन है एक्सेप्ट वोवन बैग जो कि हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर कंपनी को बेचते हैं, जो अल्टीमेटली फार्मर्स को ही सर्व करते हैं, वी नाउ जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारी प्रोडक्ट लाइन आ रही है उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट फार्मर से बने। सो इन फर्टिलाइजर ऑल्सो, चाहे रिटेल हो जहाँ पे डायरेक्ट फार्मर्स आएंगे, चाहे ग्रीन एनर्जी हो जो कि हमें डायरेक्ट फार्मर से पराली खरीदनी पड़ेगी या उनके शुगर केन का वेस्ट खरीदना पड़ेगा, तो वो कंपनी को एक पॉजिटिव वे में रियलाइज करें कि दिस कंपनी इज हेल्पिंग देम, एम्पावरिंग देम and helping them to earn some extra money. And that will we are not only going to them that you buy something. We'll go to them and say we will buy something from you. we will buy something. Both way, we can do an integration in such a fashion that you need money, we are there with you.
Okay. You grow with this fertilizer, and whatever waste you generate, product you sell wherever whatever waste you generate, you give us back to us, and we'll take it from there. बिल्कुल सर, आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई थिंक दिस विल डेफिनेटली वर्क इन फेवर ऑफ द कंपनी. सो विशपाल जी, अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा. आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू अबाउट द कंपनी. सो सर प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस आपको, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को, और सर Thank you, sir, पब्लिक for having us. बहुत बहुत बेस्ट विशेस. Thank you for having us.